Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Thursday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह हम आज भी आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा आमंत्रित हैं। डॉक्टर शर्मा नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, नमस्कार। और अब शुरुआत में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Domestic equity indices declined around 0.8%, snapping 2 days winning rally amid negative global cues. Global stocks fall after Fed's decision to keep interest rates low till 2023. And gold plunges 608 rupees per 10 grams in the Delhi bullion market. नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार 2 दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला तोड़ते हुए लगभग 0.8% की गिरावट पर हुए बंद। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर को 2023 तक निचले स्तर पर बनाए रखने के फैसले के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में आई गिरावट और दिल्ली सराफा बाजार में सोने के मूल्य में प्रति 10 ग्राम 608 रुपए की भारी गिरावट हुई दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय संकेत कमजोर रहने के बीच घरेलू शेयर बाजार आज 2 सत्रों से जारी बढ़ोतरी का सिलसिला तोड़ते हुए भारी गिरावट पर बंद हुए। रुपए में गिरावट और ताजा खरीदारी न होने से बाजार की धारणा पर और भी दबाव पड़ा। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स नुकसान पर खुला और पूरे सत्र के दौरान नकारात्मक क्षेत्र में ही बना रहा। कारोबार की समाप्ति पर सेंसेक्स 0.82% की कुल मंदी से 323 अंक कम होकर 38,980 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.76% की मंदी से 88 अंक कम होकर 11,516 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां भी आज गिरावट का रुख था। मिड कैप सूचकांक 0.24% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.53% की गिरावट दर्ज हुई। Equity indices today snapped a 2-session rising streak to close with sharp losses amid negative global cues, a weakening rupee, and a lack of fresh buying triggers further weighed on market mood. The 30-share BSE Sensex opened lower and stayed in the negative zone throughout the session. It finally finished at 38,980, down by 323 points, or 0.82%. Similarly, the NSE Nifty shed 88 points, or 0.76% to close at 11,516. The broader market at the BSE also witnessed losses. Mid-cap slipped 0.24% and small-cap depreciated by 0.53%. Bajaj Financial Services was the top laggard in the Sensex SPAC, slipping 2.2%, followed by Power Grid, Larsen & Toubro, TCS, ICICI Bank, Kotak Bank, Tata Steel and Bajaj Finance. On the other hand, HCL Tech, Infosys and Maruti finished with gains of up to 2.4%. Global equities swooned after the US Fed Reserve did not unveil any additional stimulus measures at its policy meet, even though it hinted at the key interest rate staying close to zero at least through 2023. Fed Reserve Chairman Jerome Powell also said the economic outlook is highly uncertain, stoking fears of more pain in store for businesses. BSE Realty, Metal, BankX, Capital Goods, Finance, Power and Utility indices dropped as much as 1.9%, while healthcare, IT and tech closed in the green. Mr. Sharma, what is your view of the domestic market? There are strong linkages with the views taken by the Federal Reserve Chairman of unchanged US interest rates till end of 2023, even though it is near zero, so you can borrow at a very low rate of interest or a negligible rate of interest. And then they're talking about dot plot forecast. What does that mean for the benefit of our listeners, and what does this mean for a domestic market, even though you can borrow money at a very low rate of interest from an overseas market? Yes, Arjun, because demand is not happening and pandemic is continuing to threaten jobs, businesses and the health and well-being of millions, and
with a lot of uncertainty. So that's why lower interest rates are not working at this juncture, because economies are not able to enforce the positive sentiment in the markets or in the businesses and in the people. So that's why the markets are not recovering, and markets are again in the panic zone, because now the OECD and the other international organizations are forecasting that the GDP numbers may decelerate further, and India's growth rate is forecasted minus 10% in the current financial year. And though there are projections that economy will grow at the rate of 10% in the next year because of the low base effect. But at this juncture, the economic deceleration is very, very high, which is creating uncertainty and loss of consumer confidence in the markets. But lower interest rates, that is also not a good sign that if the economies, if the countries like the advanced economies are announcing that they will keep interest rates at zero level, that is also not a good sign. It means that the recovery will not happen in the shorter period of time, and jobs are not going to happen in the near future. So that's why the anticipation is that the interest rates will remain at the lower level. So overall, the economic sentiment is not in good shape, and emerging markets like India are badly impacted by the COVID-19 and anticipated to decelerate further in the deep down growth rates. डॉक्टर शर्मा, जैसे आपने कहा कि ओईसीडी ने अभी जो अपना पहले का अनुमान था मौजूदा वित्त वर्ष के लिए, वो भारत के लिए 3.6 का जो पहले अनुमान दिया था जून में कॉन्ट्रैक्शन का, उसको 10.2 कर दिया है, लेकिन उससे अगले वर्ष जैसा आपने भी बताया 10.7% ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया है. तो इसके लिए आपको लगता है कि क्या कुछ संकेत, कुछ ग्रीन शूट्स अभी दिखने शुरू हुए हैं? अगर हम पीएमआई को देखें या आईआईपी को देखें या पावर कंजम्पशन को देखें या ईवे बिल्स को देखें, खरीफ सोइंग को देखें, क्या आपको लगता है कि कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं कि सितंबर से पिकअप हो रहा है जो इकोनॉमिक रिवाइवल है? जी सोनू जी, बिल्कुल, क्योंकि पहले जो डिसेलरेशन आई थी अप्रैल के मंथ में, वो बहुत ही सीवियर थी, और उसमें जो ग्रोथ नंबर थे वो एक्सपोर्ट्स में, आईआईपी में और अदर जो फ्रीक्वेंटली मूविंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, तो डिसेलरेशन ज्यादातर 20, 25, 30, 35% और इवन के 40% तक की डिसेलरेशन देखी गई थी. अब वो डिसेलरेशन जो है वो कम होके 10 और 20% के बीच में आ गई है. अब जैसे कि आईआईपी नंबर्स हैं वो 11-12% के ऊपर नेगेटिव रह गए हैं. पहले ये 35-40% तक भी नेगेटिव चले गए थे. एक्सपोर्ट्स 50% तक नेगेटिव चले गए थे. अभी वो 14-15% रह गए हैं. तो जो डिसेलरेशन है उसमें उस गिरावट में कमी आई है. तो लेकिन उसके आधार पे भी अभी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक ओईसीडी और अदर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस, उनका एंटिसिपेशन है कि इस डिसेलरेशन को देखते हुए भी ये लगता है कि ग्रोथ रेट जो है वो 10% तक नीचे गिर सकता है. लेकिन आने वाले टाइम में जैसे कि उन्होंने प्रोजेक्शन दिया कि अगले साल में जो ग्रोथ है वो 10% के ऊपर जाएगा, वो उसी वजह से है कि एक लो बेस इफेक्ट मिलेगा. वो एक स्टैटिस्टिकल इफेक्ट आएगा कि जब हम उसको लो से ग्रोथ को मेजर करेंगे तो वो ग्रोथ ज्यादा दिखाई देगी, जिस वजह से वो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इकोनॉमी जो है जिस रफ्तार से, जिस इम्पैक्ट से गिर रही है, जिस एक्सटेंट से गिर रही है, उसी एक्सटेंट से वो बाउंस भी करेगी. अगले साल का जो ग्रोथ रेट है वो स्टैटिस्टिकली हाई रहेगा और वो 10% से ऊपर जा सकता है. मींस कि हमारी इकोनॉमी जो है वो फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी होगी नेक्स्ट ईयर में, अगर हम इस आधार पे इन नंबर्स को देखें जो ओईसीडी ने फोरकास्ट किए हैं. और हमारा ग्रोथ रेट जो है वो चाइना से भी ज्यादा होगा अगले साल में. लेकिन इस साल का जो डिसेलरेशन है वो काफी सीवियर है. शायद हम सबसे ज्यादा गिरावट महसूस करने वाली इकोनॉमी है, जो कि पहले हम फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी थे, अब हम स्लोएस्ट मूविंग इकोनॉमी बन गए हैं. इस जंक्शन पे मेरे ख्याल से जो 50 इकोनॉमीज में हमारा ही जो ग्रोथ रेट है काफी डिसेलरेटेड जोन में है. उसकी वजह यही है कि जो सर्विसेज सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है, और सर्विसेज सेक्टर बहुत ही इम्पैक्टेड है, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो. फाइनेंशियल मार्केट्स में थोड़ी सी
एक रिकवरी है, लेकिन ओवरऑल जो सर्विसेज सेक्टर है बहुत इम्पैक्टेड है। सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 58% के आसपास है जीडीपी में। तो गिरावट जो है स्वाभाविक है, और डिसेलरेशन जो ग्रोथ रेट में है वो हमारे सामने है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उसको काफी लो रेट पे देख रही है। Dr. Sharma, we saw selling pressure in the securities market today. We spoke about the real economy. But just coming back to the specific stock market index, the IT index was up marginally. There were top nifty gainers in the cash market. We also saw volume spike in specific IT stocks, some in fact hitting a 150, the 52-week high. Do you feel that not only the IT index, which has been positive today or just above just going up marginally, do you think that the stock market has now reached a ceiling? Is it likely to come down from these levels? Yes, Arjun, because now markets are at in the very, very high zone, and profit booking is, I think, inevitable at this juncture, because economy, overall stock market has recovered around 40% from its low of March. So that is a big thing, that now the investors are looking for the profit booking at this juncture. So the IT stocks particularly, because now the economies are majorly dependent on the information technology and digital economy, because work from home and IT services, internet services, all these activities are on high and on move. So that's why the IT stocks and the IT sector will perform better as compared with other sectors. And second is demand for IT services in the foreign markets, because of the rupee deceleration, the only sector which is very, very promising in the services sector category is the IT, export of information technology. So that's why the stocks are gaining, and exchange rate is also favorable for the exports of IT services. So that's why I think the sector will continuously perform well in the coming times also. And at the domestic level also, the economic activity, which is entirely dependent on the IT and the online and other related services, will continue to perform well and support the information technology sector. डॉक्टर शर्मा, आईटी सेक्टर के अलावा और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी के जो सिचुएशन है, कोविड हिट सिचुएशन, उसमें अच्छा जिनसे अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, जो सर्विसेज सेक्टर में जैसे मैंने बताया कि आईटी सेक्टर है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग में हम देखें, जैसे मैंने पहले भी बहुत बार ये अनाउंस किया है, मैंने डिस्कशन की है, जिसके ऊपर काफी डेलिब्रेशंस भी हुई है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ लो हैंगिंग फ्रूट। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है। अगर आप देखेंगे तो पीछे के जो अप्रैल और जून का अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो 23% का एक्सपोर्ट्स ग्रोथ दिखाया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और हमारी जो पैदावार है वो भी बहुत अच्छी है। हम 295 मिलियन टन का पैदावार कर चुके हैं लास्ट ईयर में। इस साल का हमारा लक्ष्य जो है 298 मिलियन टन है। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर सरकार का खास ध्यान है। सरकार ने बहुत सारी अनाउंसमेंट की हैं। अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर अमेंडमेंट बिल, जो 3 बिल पास हुए हैं, जिसमें जो एग्रीकल्चर मार्केट को लिबरलाइज किया गया है कि किसान कहीं पे भी जाके अपना जो प्रोडक्शन है उसको बेच सकते हैं, ट्रेडर्स कहीं से भी खरीद सकते हैं, जिससे कि किसानों को बेटर प्राइस मिलेगा। और काफी सारी आइटम्स जो है वो इसेंशियल आइटम से निकाल दी गई हैं, सो दैट के किसानों को जो उनकी पैदावार है उनका भरपूर प्रयास मिल सके, उनका अच्छा जो रेटिंग हो सके। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि मैं समझता हूं कि एवरग्रीन सेक्टर है। जैसे कि अभी पेंडेमिक सिचुएशन में भी इस सेक्टर ने अच्छा ग्रोथ रेट पोस्ट किया है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है लगभग कोई 3.4% के ग्रोथ रेट पे देखा गया है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जबकि पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर ने पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिया है। और ये बहुत ही इम्यून सेक्टर है, क्योंकि कोरोना का इफेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर तक पहुंचते बहुत टाइम लगा है, अभी भी नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि ज्यादातर जो कोरोना का इम्पैक्ट है बड़े शहरों में है और जो खेती है वो ज्यादातर रूरल एरियाज में होती है। तो इस सेक्टर में जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट रहेगी। और आने वाले टाइम में जो एक्सपोर्ट मार्केट है, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, उसके ऊपर सरकार का खास ध्यान है। सरकार ने कोविड में भी बहुत सारी अनाउंसमेंट की हैं। जो हॉर्टिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड अनाउंस किया गया है 15,000 करोड़ रुपए में, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया शुरू में ही।
और उसके अलावा जो 50,000 करोड़ जो है वो इसके लिए सिंचाई के लिए जो योजना है उसमें अनाउंस किया हुआ है। तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स सरकार की तरफ से अनाउंस हो चुकी हैं जो कि अभी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट करेंगी, जो कोल्ड स्टोरेज, वैल्यू चेन्स, ग्लोबल वैल्यू चेन्स और जो रूरल रोड्स हैं उनको मंडी से कनेक्ट करना और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन बनी रहेगी। तो इस जंक्शन पे जो एफडीआई है वो भी काफी स्वाभाविक है, हम एफडीआई भी और अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सेक्टर ओवरऑल एक प्रॉमिसिंग सेक्टर दिखाई दे रहा है इस समय पे, जो कि हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है और एग्रीकल्चर हमारी एक स्ट्रेंथ है और एग्रीकल्चर सेक्टर के सपोर्ट से हम वापस रिजुविनेट कर पाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जो डिमांड क्रिएट करेगा और डिमांड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर विल ऑल्सो ग्रो विद द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। Dr. Sharma, just coming back to infrastructure now, because we are seeing that the metal index, even though it fell by 1.2%, we are seeing a long build-up in the futures market for stocks like SAIL, and even in the private sector, Tata Steel has done very well, recovered after its initial lows during pandemic. How do you relate the real economy of infrastructure development and real estate, along with the demand for metal, both in the domestic market and overseas, and therefore its reflection in the stock valuation of metal index? Yes, Arjun, I believe some build-up in the futures market in these stocks, I believe that is some speculation, because sometimes when there is a profit booking in the market, they invest in the derivative market. They took their positions in the derivatives so that, and they sell in the cash market, and a lot of FIAs and other high investing groups are doing such kind of things in the uncertain markets. So I believe that is that may be momentary for at this juncture, because now global cues are not that much good and not favorable for the economy. So that's why sometimes they took positions in the derivatives and sell in the cash market. So I don't see any build up because of the recovery in the economy, because economy is still in the uncertain zone, and there is not that much demand creation, and demand is not coming out because of the uncertain times. So in the coming times, if the infrastructure spending is increased by the government and the expenditure in the rural areas is increased by the government, then we can see some uptick in the demand scenario, and stocks like infrastructure stocks and the related stocks will also start to move in the higher trajectory on the basis of the revival in demand scenario. So, डॉक्टर शर्मा, ऐसे माहौल में जब अनसर्टनिटी है काफी अभी भी कोविड को लेकर और उससे रिलेटेड सिचुएशन हर कह लें कि लगभग हर सेक्टर को अफेक्ट कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स, जैसा इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी कहा है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स भारत के ग्रोथ के अच्छे हैं। सो ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या सलाह होगी जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं? जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो रेटिंग एजेंसीज, जो हमारे थिंक टैंक जो बता रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ स्टोरी है वो टोटली इंटैक्ट है। खाली एक ही विलन है जो कि कोविड है। कोविड की वजह से इकोनॉमी इम्पैक्टेड है, अदरवाइज जो slew of economic reforms, plethora of economic reforms during the last 5-6 years, and particularly in the last 1 year, and more particularly in the last 3-4 months, is very, very appreciable, and that will boost the economy and support the economy in high growth trajectory. Economy will become sustainable in the high growth at the rate of 9% or 10% in the coming time. But the only uncertain situation is created by the pandemic COVID-19. If this is reduced and the impact of the COVID is becoming a slower and decelerated trajectory, then there is no looking back for the economy, and the economy will post good growth numbers sooner than later in the coming times. और मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में जो अगर कोविड का जैसे ही इम्पैक्ट कम होगा तो इकोनॉमी में एक शार्प रिबाउंड आएगा, दो वजह से। एक तो लोअर स्टैटिस्टिकल बेस, और दूसरा जो सरकार ने रिफॉर्म्स अनाउंस की हैं उनका जो फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे वो इकोनॉमी को एक तेज गति में लेकर वापस उसको पोस्ट करेंगे एक हाई नंबर्स में। ग्रोथ
जो है वो 10% से भी कहीं ज्यादा आगे निकल सकती है। तो जिनका लॉन्ग टर्म हराइजन है वो इन्वेस्टर्स बने रहे बाजार में, आपकी ये राय होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस टाइम पे स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टर ये सोचता है कि उसको आज इन्वेस्ट किया है और एक हफ्ते में उसका रिटर्न मिल जाए तो वो बहुत बड़ी गलती करेगा। एक मार्केट कभी भी करेक्शन ले सकती है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म में मार्केट्स बहुत अच्छी रहेंगी और जो इन्वेस्टमेंट्स है उनके अच्छे भरपूर रिजल्ट आएंगे। आइए एक नजर डालते हैं करेंसी बाजार पर, जहां आज गिरावट दर्ज हुई है। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की कमजोरी दर्ज करता हुआ 73 रुपये 66 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट के अनुरूप रुपये में ये कमजोरी आई। इस बीच 6 मुद्राओं के समूह के मुकाबले डॉलर की मजबूती मापने वाले डॉलर सूचकांक में 0.06% की गिरावट आई और ये 93.15 पर दर्ज हुआ। डॉक्टर शर्मा, रुपए में हम देख रहे हैं कि इस पूरी अनसर्टेनिटी के माहौल में भी मोर और लेस स्टेबिलिटी बनी हुई है इन लेवल्स पर 73, 74। तो ये कुछ इनहेरेंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दर्शाता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है सोनू जी के, क्योंकि जो एडवांस इकोनॉमीज हैं उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो जैसे हम शुरू में ही डिस्कस करके हटे हैं कि वो जीरो के आसपास हैं और वो इसी स्तर पे आने वाले टाइम में भी दिख रहे हैं। तो जब वहाँ के इंटरेस्ट रेट लो रहेंगे तो कंपैरेटिवली जो हमारी एक्सचेंज रेट है वो इंटैक्ट रहेगी, वो स्ट्रेंथेंड रहेगी। अगर वहाँ पे वो अनाउंस कर दें कि वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने वाले हैं तो फिर एक्सचेंज रेट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो कंपैरेटिवली जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो उस वजह से भी स्टेबल हुआ है, क्योंकि उधर के जो एडवांस इकोनॉमीज के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं बहुत ही लो उसमें है, जीरो के बराबर है। और दूसरा कारण यह है कि हमारी स्टॉक मार्केट अभी भी इंटैक्ट है। हम 40% के आसपास रिकवर कर चुके हैं। जो कैपिटल फ्लो है वो काफी इंटैक्ट है और जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो काफी अच्छी शेप में है। चाहे वो ये बहुत अच्छा नहीं होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जब बढ़ते हैं तो इट मीन्स के स्पेंडिंग बहुत कम हो रही है। लेकिन उससे रूपी को स्ट्रेंथ मिली हुई है कि जो हमारे पास जो मुद्रा अभी विदेशी मुद्रा भंडार है वो काफी ज्यादा है और जिस वजह से हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो भी स्टेबल जोन में। डॉक्टर शर्मा, आपने इंटरेस्ट रेट्स की बात की तो आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने कल कहा कि आगे जो रिकवरी है वो स्लो होने की प्रोस्पेक्ट्स है, लेकिन दूसरी तरफ इन्फ्लेशन हमारी जो है वो 5 महीने से 6% के स्तर से ऊपर चल रही है। सो ऐसे में क्या आपको लगता है आरबीआई का क्या रवैया रहेगा इंटरेस्ट रेट्स की तरफ? देखिए, आरबीआई का रवैया इस समय पे यही रहेगा कि वो वेट एंड वॉच में रहेंगे, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो 6% से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। जो उसका ट्राजेक्टरी है सीपीआई का वो 4 से 6% के बीच में है और अगर ये 6% के ऊपर रहता है तो इंटरेस्ट रेट के कम होने की बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि ऑलरेडी पीछे 3-4 महीनों में जब से ये कोविड का इम्पैक्ट शुरू हुआ है आरबीआई 115 पॉइंट से जो रेपो रेट को कम कर चुका है। तो इस जंक्चर पे जब इन्फ्लेशन हाई है और तो उस टाइम पे अभी ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि आरबीआई और कट करेगा। आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा लंबे समय के लिए ब्याज दर निचले स्तरों पर बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराने, लेकिन संकटग्रस्त अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन पैकेज न देने का फैसला लेने के बाद एशिया पैसिफिक क्षेत्र के शेयर बाजार आज गिरावट में रहे। हांगकांग का हैंगसेंग 1.6% लुढ़क गया और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.2% की भारी गिरावट दर्ज हुई। जापान का निक्केई सूचकांक 0.7% के नुकसान में रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.4% की गिरावट पर बंद हुआ और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.2% के नुकसान पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी मंदी का रुख था। लंदन का फुटसी और फ्रांस का कैक 0.8% की गिरावट पर थे। जर्मनी के डैक्स में 0.7% का नुकसान चल रहा था। Moving on to the U.S. market, the S&P 500 and Nasdaq Composite ended lower yesterday. The U.S. stocks fell as losses in technology shares outweighed a Federal Reserve statement that stoked optimism it would keep U.S. interest rates near zero for a prolonged period. The S&P 500 fell 0.5% and the Nasdaq Composite Index plunged 1.3%. The Dow Jones Industrial Average managed to edge marginally by 0.1%. Dr. Sharma, we had discussed about low interest rates and somehow FIIs are looking at it negatively, even though they're able to borrow at a very low rate of interest. We've seen a fall in the markets not only
in the BSE and the NSE, with the BSE falling by 323 points, but also in the Asian markets and in intraday trade, the European markets as well. So what's really going on with the US economy? And we are seeing a loss in valuation for technology shares. Why is there a loss in valuation? Why is the profit booking right now? Has it gone up too high? And are the expectations unreasonable? Uncertainty, Arjun. Uncertainty is a major point, major parameter which is impacting the markets, because the COVID is increasing each day. The number of cases are again in the high trajectory in the US and the other economies, and in India also. India was earlier growth promising economy, but because of COVID, now the growth rate is anticipated to decelerate in the negative zone by 10%. So overall, the impact of COVID is becoming more and more severe each day. So that's why the markets are now looking at the profit booking, and liquidity is not working, because if the futuristic outlook is not promising and there is a lot of uncertainty, then the liquidity becomes also not favorable for the markets. So I think there will be some profit booking in the emerging markets and in the advanced economies, and India is also not immune to the global uncertainty, and markets at this juncture will remain very, very volatile in the next few days. You spoke about uncertainty in the US market right now because of what's going on with the real economy and the COVID-19 crisis as well. Do tell us just briefly about this injection of liquidity into their businesses. It's not been working. What's the next step? Very briefly. I think they can think about some next dose of liquidity, because if the job creation is not happening and the economy again starts decelerating, then there will be next wave of stimulus, not only by the US economy but other economies also, because impact of COVID is lingering. So that's why the impact of previous stimulus is now becoming less effective. So there will be another wave of stimulus by the I think almost all the economies which are impacted severely by the COVID-19. Well, let's have a look at the oil market now. Oil prices were steady in intraday trade. Concerns about weak fuel demand amid increasing coronavirus cases weighed on global crude prices. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $42.30 per barrel, while WTI crude prices were around $40.20 per barrel. Dr. Sharma, we are seeing once again a steady rise in the crude prices globally. But how is demand being affected, especially with the international tensions between US and China, India and China? Is oil consumption, has it gone up? Is that why we are seeing a steady rise in prices, or is OPEC controlling production once again? Very briefly. That's majorly because of the production cuts, I believe. Because demand is not happening, that is also visible, that demand is nowhere in the world economic system. That's why the economic growth rates are anticipated in the negative trajectory. So this is only because of the production cuts and uncertainty in the global economy, like you already mentioned, tension between US and China, India and China. So that's why the speculation is happening in the commodity markets. अब सोने पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 608 रुपए कम होकर 52,463 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। सोने में ये गिरावट अंतर्राष्ट्रीय रुख कमजोर रहने के बीच आई। चांदी में भी निवेशकों की रुचि कम रही और ये 1,214 रुपए लुढ़ककर 69,242 रुपए प्रति किलो पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मंदी के साथ $1,943.80 प्रति आउंस पर और चांदी $26.83 प्रति आउंस पर थी। विशेषज्ञों के अनुसार आर्थिक सुधार की गति धीमी रहने के अनुमान को देखते हुए अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा 2023 तक ब्याज दर शून्य के करीब बनाए रखने का संकेत देने के बाद डॉलर सूचकांक में फिर लौटी तेजी के चलते सोने में बिकवाली आ गई। समय बिल्कुल समाप्त हो गया है, सो हम इस पर चर्चा आज नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डॉक्टर शर्मा। थैंक यू सोनी जी, थैंक यू अर्जुन।
Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic equity indices declined around 0.8%, snapping 2 days winning rally amid negative global cues. Global stocks fall after Federal Reserve's decision to keep interest rates low till 2023. And gold plunges 608 rupees per 10 grams in the Delhi bullion market. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.